ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। एक्चुअली हमने ओ आर बी यूज़ किया हुआ है। ये मैं दिखा देता हूँ ओ आर बी। ये इंडिकेटर में कैसे प्लॉट करेंगे ओ आर बी, यहाँ से जाके ओपन रेंज ब्रेकआउट। ये एक्चुअली ओपन रेंज ब्रेकआउट एक इंडिकेटर है, ये हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे ही प्लॉट कर सकते हैं। और ये दिन में एक ही बार हमें ट्रेड बनता है। मॉर्निंग में मोस्टली 9:15 से लेकर 10:15 या 11 बजे तक का ये ट्रेड बन जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। अभी फ़िलहाल देखिए इसका जो फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो, ये एक अपना लेवल मार्क कर लेता है। फर्स्ट कैंडल का हाई इसका रेजिस्टेंस है और फर्स्ट कैंडल का लो इसका सपोर्ट है। तो जब भी ये हाई के ऊपर निकलता है तब हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और इसके नीचे निकलता है तो हमारा ब्रेकडाउन माना जाता है, और इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट माना जाता है। तो मोस्टली एंट्री बाइंग के लिए हम इस ये लेवल जब निकलता है तब करते हैं, और जब ये लाल वाला लेवल नीचे की तरफ निकलता है तब हम सेल के लिए एंट्री लेते हैं। तो फिलहाल तो इसमें ऊपर जाके नीचे आ चुका है, तो आज का डेट खत्म हो चुका है। बट मोस्टली अगर देखेंगे दिस इज मोस्टली फॉर स्कैल्पिंग पर्पस, राइट। तो यहाँ से आप जैसे ही ब्रेकआउट होता है स्कैल्पिंग करके एक या दो कैंडल में लेके अपना निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। इसमें नॉर्मली जो हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं वो ये रहेगा, इसके नीचे ये स्टॉप लॉस है। मैं इधर बता देता हूँ, कैंडल कहाँ है, इधर ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एरिया स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इस कैंडल का लो है, राइट। अगर आप देखेंगे इसमें तो ओपन इक्वल्स टू लो भी बना है, सो दिस विल बी माय स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मैं स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो मोस्टली ये एक स्कैल्पर के लिए मॉर्निंग में हम आई थिंक आधे घंटे 1 घंटे में ट्रेड फिनिश हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो ये तो फिलहाल तो अभी ये रेंज में आ गया है वापस। आज का डेट खत्म हो चुका है। आप कल मॉर्निंग में देख सकते हैं इस फर्स्ट कैंडल का हाई और लो कहाँ बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस टू यूज ओ आर बी। इसको हम बोलते हैं ओपन रेंज ब्रेकआउट, राइट। बाकी एक बार डैशबोर्ड्स देख लेते हैं चार्टिंग पे कि कुछ डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं हमने। तो एक मैंने ये भी बनाया हुआ है, एटलस भी बनाया हुआ है इसका एक। ये दिस आई यूज फॉर माई सेल्फ ट्रेडिंग पर्पस, so just I am showing here. So if you see here, I have created multiple filters are created, so based on that I trade and I invest. Mostly I do swing trading. See here, Sundaram break and all those things, Cabra extrusion, BLS, right। BLS का चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये एक्चुअली मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे ऑल डेटा के हिसाब से, और ये कुछ मैंने मूविंग एवरेजेस यूज़ किए हुए हैं, तो अभी ये अपने बॉलिंजर बैंड लो के आसपास चल रहा है, डिमांड जोन पे है। तो ये एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। देखिए बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, राइट। SOTL है। मैं प्राइस के ऊपर एक्चुअली देखता हूँ, जो हाई प्राइस वाले हैं उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो होता है रिटेल ट्रेडर वो इनमें नहीं प्ले करना चाहता हो, क्योंकि उसको महंगे लगते हैं ना स्टॉक। 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के स्टॉक हैं, उसको लगता है महंगे, बट एक्चुअली महंगे नहीं होते हैं। इनकी बुक वैल्यू के हिसाब से या फिर इनकी मार्केट कैप के हिसाब से इनका प्राइस रहता है। तो ये महंगे नहीं है, ये लगते हैं महंगे, राइट। तो देखिए ये एसकेएफ इंडिया का मंथली चार्ट है, देखिए डिमांड जोन के आसपास खड़ा हुआ है ये, राइट। तो इस हिसाब से आप अपने सीख के इसको किया जा सकता है, राइट। तो ये सारे फिल्टर्स हैं, तो ये आप फिल्टर बना सकते हैं, ये सीख सकते हैं आप चार्टिंग में कैसे बनाना है, क्या है वो करके कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम है, MGL है, UTI एमसी है। एक बार UTI एमसी का चार्ट देखिए, ये अपने डिमांड जोन से वापस हुआ, ये डिमांड जोन है, राइट। तो मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस यूज़ किए हुए हैं, उसके हिसाब से ये डिमांड जोन से ये रिवर्ट हुआ है, राइट। अब ये देखिए प्रिसिशन वायर है, ये देखिए ये ऑल टाइम हाई चल रहा है प्रिसिशन वायर। तो एक फ़िल्टर, एक एक्चुअली स्कैनर ये भी है जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को निकालता है, राइट। बट वी नीड टू बाय ओनली ऑन डिप्स, वी हैव टू सी द डिप्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू टेक द एंट्री। सी देखिए MACD क्रॉस ओवर है, राइट। तो इतने सारे ये स्कैनर्स बना रखे हैं, तो दैट यू कैन लर्न इट हाउ टू क्रिएट, एंड यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन, कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको कंफर्ट है, उस स्ट्रैटेजी का फ़िल्टर यहाँ पे इजीली बना के उसको ट्रैक किया जा सकता है। और इसमें एक ऑप्शन भी होता है नोटिफिकेशन का, तो वो आप अगर प्रीमियम वर्जन लेंगे देन यू विल गेट दैट ऑप्शन। तो प्रीमियम वर्जन लेके आप उसमें नोटिफिकेशन लगा दीजिए पर्टिकुलर फ़िल्टर के लिए, और जबकि आपको मेल में आएगा अलर्ट, एट द टाइम यू कैन check the chart and based on that you can take a position।
तो ये एक तरीका है काम करने का जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। कोई रिकमेंडेशन नहीं है यूज़ करने की। आपको अगर कोई और अच्छा टूल मिल जाता है तो यू कैन यूज़ दैट, बट आई नॉर्मली यूज़ दिस वन एंड आई हैव क्रिएटेड मेनी scanners for personal use. You can see that. MACD crossover देखिए बजाज होल्डिंग में जा रहा है, so this is a good one, right? So you can see that there is a reversal you can see है, right? पहले लाल कैंडल थी, फिर यहाँ पे वाइट कैंडल आई है, this is a reversal candle basically, right? तो अगर हम देखें यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज also you can see there seems to be a reversal point. This is basically a demand zone, right? तो इस हिसाब से आप किया जा सकता है, एक स्कैनर बना के कर सकते हैं, right? पॉलीकैब, एम्बर, एल्केम लैब देखते हैं। ठीक है, मेरे को तो स्टॉक्स के नाम याद हो गए हैं, तो मैं तो देख लेता हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ तो। सीमेंस है, पीआई इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक्स है। बेसिकली ये मेरा एम है दिखाने का, ठीक है? तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं उधर चार्ट में, तो ये चार्ट देख लीजिए आप। तो ये OR भी है अभी, राइट? इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? देख सकते हैं इसको। मेरे वीडियोस कहाँ से आएंगे इसमें? अकाउंट भी चैनल यहाँ से आ जाएगा। मैं शेयर करना इसका कर दिया। देखिए ये सारे वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए रिलेटेड टू IPO, राइट? एंड दिस यू कैन सी 02 Pro रोडिंग मैप। तो ये व्यूज़ कम है क्योंकि नया चैनल है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो इसमें व्यूज़ बढ़ेंगे, राइट? ये देखिए निफ्टी में तूफान, ये कुछ पुराने वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हैं, लेट्स का IPO अलॉटमेंट, राइट? ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स भी हैं इधर, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स भी। शॉर्ट्स में एक्चुअली व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्ट्स में व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए ये तो नए कम व्यूज़ है, भी नए हैं ये। अगर आप पुराने देखेंगे जो मैंने IPO से रिलेटेड बनाया, उसमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप देखिए, इसको प्रमोट करिए, शेयर करिए। देखिए लेंसकार्ट का IPO स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी 7.8 के व्यूज़ आए हैं, फिजिक्स वाला में 1.5 के आए हैं, राइट? और ओखला IPO में 3 पॉइंट के रिव्यूज़ आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको एक बार देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे। 1.1 के आए, सबसे ज़्यादा आई थिंक टाटा वाले में आए थे, जो कि अराउंड ये एक है जिसमें सिल्वर पे वीडियो बनाया था मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। कल सिल्वर में 6% करेक्शन आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब कुछ ही दिनों में 30-40% चल जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। यही चीज़ सिल्वर में भी हुई है और लोग उसे बोल रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश। आप अगर इस चार्ट में देखेंगे तो अभी सिल्वर की कीमत 51 आउंस के आसपास है, तो ये मैक्सिमम 47-48 आउंस का आ सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। गुड। कल सिल्वर में 6% करेक्शन। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई है, खरीदना चाहिए या नहीं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी सरकार सोना खरीद रही हैं। चलिए वाला तो दिखा दिया, और देखिए और कौन सा वीडियोस है, और शॉर्ट्स देखिए जिसमें ज़्यादा व्यूज़ हैं, दिखा देता हूँ। एक टाटा कैपिटल का था, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए थे। ये देखिए इसमें आए थे 20 के व्यूज़, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था ये वीडियो। की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल लिस्ट होने वाला है। अब लिस्टिंग डे पे करना क्या है आपको, देखिए अगर आपने टाटा कैपिटल के IPO में अप्लाई किया है तो 99.9% आपको अलॉटमेंट तो मिला ही होगा। अब करना क्या है, कल जैसे ही आपका 10 बजे
लिस्ट होता है आईपीओ, आपको जो भी प्रॉफिट मिले बुक कर लेना है। 2 से 5% लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन है, बट ये भी हो सकता है कि वो नीचे खुले, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल ट्रम्प टैरिफ की वजह से। ठीक है, तो मैं तो भाई 100% अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। 10:01 पे बटन दबा दूंगा मैं। ठीक है, और क्योंकि चार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास स्टॉप लॉस भी नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए हम गैन लेवल्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे स्टॉप लॉसेस माने जाएंगे 309 और 289 लेवल्स के। तो आप कमेंट करके बताइए आपकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। गुड लक। टाटा कैपिटल आई। तो ये है कुछ वीडियोस, और दिखा देता हूँ मैं आपको और कौन से पुराने वीडियोस जिसमें ज़्यादा लाइक। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आई थिंक पॉपुलर में, हाँ इससे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए ये आप लोगों ने बहुत पसंद किया, ये टेक्निकल वाला है चार्ट, जिसमें आप है ना, ये अच्छा है। और पॉपुलर कौन से हैं, और ये पॉपुलर टाटा कैपिटल वाला है, लेंस कार्ट है, ब्रांड नेम वाले जितने भी वो सारे कैपिटल, मिडवेस्ट आईपीओ 3.1 के व्यूज़, तो ये सारे हैं। तो आप देखिए इसे, चैनल को शेयर करिए लोगों से। इस पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, राइट, दैट यू कैन यूज़ इट फॉर शेयरिंग पर्पस एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर लर्निंग पर्पस। तो ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, ये मैंने आज ही बनाया है। दिस इज रिलेटेड टू, आज सोमवार है 23 फरवरी है, तो आप सभी को ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं। एक नया आईपीओ आ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू जेम्स एंड ज्वेलरी। इसका नाम है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका बेसिकली डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। इनकी प्रमोटर या पेरेंट कंपनी हम मान सकते हैं पीएन कार्ड के लिए काफ़ी फेमस कंपनी है। कुछ दिन पहले इनका आईपीओ भी आया था। इनकी प्रमोटर होल्डिंग करीब 60% है और इनके करीब 34 स्टोर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। मोस्टली इनका फोकस रहता है महाराष्ट्र मुंबई साइड में। अब बात कर लेते हैं कुछ आईपीओ डेट्स की। देखिए 24 से 26 फरवरी के बीच आईपीओ खुला रहेगा। रिटेल के लिए सिर्फ 10% है, तो ये नहीं चाहते आई थिंक कि रिटेल अप्लाई करें, और अगर हम अप्लाई भी करेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस कम है क्योंकि सिर्फ 10% कोटा है। तो आप बेसिकली एचएनआई या बिग एचएनआई में अप्लाई किया जा सकता है अगर आपको लगता है अप्लाई करने का। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है अप्लाई करने की, बट इफ यू फील यू शुड अप्लाई देन यू कैन अप्लाई इन बिग एचएनआई और नॉर्मल एचएनआई। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। देखिए एसेट्स बढ़े हैं, करीब तिगने हुए हैं, प्रॉफिट्स रिड्यूस हुआ है और रिजर्व्स भी बढ़े हैं। रिजर्व्स क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली इक्विटी डायल्यूट की है। तो बेसिकली इक्विटी डायल्यूट करने की वजह से आई थिंक ये नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली फंड्स क्यों उठा रहे हैं? इनको अपने न्यू स्टोर्स खोलने हैं और बेसिकली प्रमोशन और मार्केटिंग करनी है, इस वजह से फंड उठा रहे हैं। चलिए वो एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस इस टाइप का है। दूसरा, लिस्टिंग गेंस 3 से 6% से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो ये सारी डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। और हाँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। गुड लक। एक ये बनाया था, ये आपने देख लिया। एक वीडियो और दिखा देता हूँ जो कल बनाया था 0 टू प्रो, वो बहुत अच्छा बना था वीडियो, उसमें बहुत मेहनत करी है मैंने। तो काम करने जाता हूँ पीएनजीएस रेवा डायमंड जो ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सीखिए, उसको फॉलो करिए। बहुत मेहनत की है इस वीडियो में मैंने, इसमें व्यूज़ ही नहीं आए, 2 व्यू आए हैं बस। आज हम बात करेंगे जीरो से प्रो ट्रेडर का सफ़र जो कोई नहीं बताता। अगर आप 6 से 12 महीने से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये एक ऐसा रोड मैप है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और यहीं से डिसाइड होता है कि आप ट्रेडर बनेंगे या आप मार्केट को डोनेशन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस रोड मैप में टोटल 6 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फाउंडेशन, दूसरा टेक्निकल कोर, तीसरा टेक्निकल सेटअप, चौथा साइकोलॉजी एंड एग्जीक्यूशन, पांचवा मार्केट मेकर लॉजिक और छठा फाइनल प्रो ट्रेडर डेस्टिनेशन। देखिए पहले फेज में हम चार्ट देखना सीखते हैं। दूसरे फेज में नॉर्मली हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे और वॉल्यूम को पढ़ना सीखेंगे। तीसरा फेज होता है आपका टेक्निकल सेटअप, उसमें एक हम सेटअप डिसाइड करते हैं। ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है, इसमें हमें एक सेटअप डिसाइड करना होता है क्योंकि इसमें हमें कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है और जो नया ट्रेडर होता है वो सेटअप या स्ट्रैटेजी को जम करता रहता है। चौथा फेज होता है साइकोलॉजी एंड एग्जीक्यूशन। ये ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा तोड़ता है क्योंकि इसमें रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फियर एंड ग्रीड सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है मार्केट मेकर लॉजिक। इसमें हम प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी एक बार सेट होगी फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं। और लास्ट फेज आता है प्रो ट्रेडर डेस्टिनेशन, जहाँ आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स फॉलो करते हैं और एक अपना ट्रेडिंग जर्नल बना के एक स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करते हैं। तो ये था पूरा रोड मैप फ्रॉम जीरो टू प्रो ट्रेडर।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस। गुड लक। तो ये देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, इसको लाइक और शेयर करिए, व्यू करिए। 2 ही व्यूज़ हैं इसमें, तो ऐसा लगता है लोग सीखना चाहते ही नहीं हैं। टिप्स चाहिए बस सबको, सीखने का तो कुछ आता नहीं है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं फिर अपने, और क्या, ट्रेडिंग व्यू वाले। इसमें 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, वो अपडेट होता रहेगा। देखिए अपडेट में क्या आता है, हम देखेंगे। तो ये देखो लाइव मार्केट चल रहा है, ये अपना सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन ही बन के आ रही है। और आप अगर ये देखेंगे, इसमें आपको एक ये दिख जाएगा वीसीपी पैटर्न करीब। वीसीपी पैटर्न क्या होता है, उसमें आपका वॉल्यूम कम होता जाता है, लिक्विडिटी कम होती जाती है, और उसमें एक वीसीपी पैटर्न बना देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वीसीपी पैटर्न कैसा लगता है। इसमें है कुछ क्या, आर्क है ना, आर्क से बनाया तो आर्क नहीं आएगा, आई थिंक वो डालना पड़ेगा। आर्क नहीं, कर आएगा। हाँ, कर से बनाया तो देखो, क्या बोल आर्क। अरे यार, यार कैसी आ ही नहीं रही यार, बना देता हूँ अभी इसको। देखो ये आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये मैं वीसीपी पैटर्न बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ। वीसीपी पैटर्न क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी कम होती चली जाती है, राइट। ये वीसीपी पैटर्न है, ठीक है। ये वीसीपी पैटर्न है बेसिकली। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम। ये वीसीपी पैटर्न है, तो ये हम बना देंगे वीसीपी पैटर्न। इसमें क्या होता है ना, लिक्विडिटी कम होती चली जाती है मार्केट में, और ये इस टाइप से बना देते हैं, राइट। So this is called basically the VCP pattern. VCP तैयारी क्या है, पैटर्न। ये VCP पैटर्न है। अब एक काम करते हैं, एक वो चला देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स कहाँ गया, जूम कहाँ गया मेरा। Good morning, sir. How are you? Yeah, good morning. Yes, I am fine. How are you? I'm good, thank you. How is the morning there? The morning's good. How about you? Here a sunny morning today. Okay, yeah, that's good. It is 8:30 in the morning. Yes. Oh, okay. So you guys woke us 4 hours. 3.5. 5, yeah. 3.5. 3.5 hours. Yeah. Okay. So, so Nikhil, you are in 10th standard and you will be having exams also, correct? In the board exams. You have board exams there? Yes, we have board exams. So, when are these scheduled? Next month, correct? Yeah, these board exams, you mean for my final? 10th exam, 10th final exams, 10th grade final exam. Final exams will be in June. June, Yes, June. Because I'm still in term 1 now, and I've got to go to my term 2 and term 2. Okay. Okay, so let's start. So,
From where do you want me to start? From the beginning, or any specific thing you want to start with first? How is it? Maybe some other theories as well, some other strategies. So, do you want me to start directly from the strategies, or do you want me to give some brief about the candles and some indicators? How is it, like basics, and then we will go to the strategies? Yeah, we can start with basics. Because there are many basic candlestick patterns that we can understand first, and then we can later we will combine those patterns with indicators, and then we will form a setup. Okay. 1 second. Let me share my screen. 1 second. No problem. So, do you trade in stocks also? No, I don't. My brother was learning about stocks, and I'm just doing forex. Okay. Because in India, the most common thing is to trade in stocks actually. So if you see from the high percentage point of view, most of the people love to trade in stocks. They also do a long-term investing as well, right? They also do long-term investing. Okay. Okay. So trading. So are you aware about different flavors of trading? Like what all types of trading are there? Yes, I'm aware. Okay. So scalping, intraday, swing, positional, you know, right? Yes, scalping is like 2-3 minutes, and then intraday is during that specific day. Yeah. And then swing is long term. Right. Okay. And you know about risk management? No, not really. Okay, so because this is very important, risk management. See, risk management and money management. These two are very important. Whether you are doing forex trading, crypto trading, or any other trading, right? These two are the main areas of trading, actually, right? So, risk management is a kind of thing. Okay, first you tell me what do you understand by risk management? You more like managing your risk so that you don't have such a large risk to your profit, and you're protecting your capital. Capital, yes, right. So in risk management, we basically focus on, as we discussed in the first class, we focus on entry, targets, and stop loss, right? So that stop loss is the most important thing, so that we can protect our capital when we use the stop loss, right? So there is one more point called trailing stop loss. Do you have any idea about trailing stop loss? No. Okay, so I'll just explain you trailing stop loss. So let's say entry point, target, and stop loss. Okay, so let's say we entered around at $5. Okay, let's say my entry price is $5, right? And I'm planning my target price means the where I will book my profits is $7, and my stop loss is $1, right? Means $1 in terms of money, and profit will be $2, right? So my risk reward will be 1:2, correct? Yes, 1 to 2. So what I am going to do when my forex reaches to $6, right? Right now it is at 5, and once my forex reaches at 6, what I am going to do, I will change my stop loss to six, $5. From $1. Equal to my entry point. Once I am getting some profits in my trade, I will change my stop loss to, I will move my stop loss to the entry point. Whatever price I have entered, I will change my stop loss to that point. So that is called trailing stop loss. Yes, okay. Trailing stop loss. So similarly, if my entry point is 5 and my profit target is 10, so this trading stop loss is useful at that time when my targets are more, right? From 5 to 10. I want a profit of $5, right? So in that case, trading stop loss will be
very useful. Let's say my price went to 8. Now I can move my trailing stop loss to 6, and once this target is reaching 9, I can trail my stop loss to 7, right? So I can keep trailing my stop loss so that if the instrument is coming down suddenly, I may not lose my profits. Oh, okay. Yes, I understand. Okay, so you, as it's going up, you push your stop loss higher, higher. So even if it comes down, instead of losing like $50, you only lose $10. Yes. Okay, so that is called trailing stop loss. Right. Trailing stop. Let me just write it down. Yeah, sure. Okay. So there is one more thing which is called as 50% profit booking. Means, let's say you entered at $5. Okay. Yes. You have, I would say, let's say you have around 20 quantities, right? And your target price is around $10. Stop loss is already there at the place, like $3 or $4. In this case, what you are going to do, once your target reaches to 8, you are going to book 50% of the profits. Means you had 20 quantities, you are going to sell 10 quantities at $8. Okay, and get the profit from there. And get the 50% profits from there, and then trade your stop loss for the remaining quantities to $8. Okay. And then you can wait for the next target, which is $10. Okay, yes, I understand. So 50% you can keep on booking. So this way you can take the maximum profits in that trade. Okay. So it's like having two take profits, right? You set your first one, which is $10, but when it gets to 8, it comes 10 lots. 10 lots you cash out. Yes. And your trailing stop loss comes up to $5, right? Yeah. So most of the safe traders will try to use this kind of strategies who are using more capital, who have more capital, right? So they don't want to risk their capital. That is why they are using the combination of trailing stop loss and 50% booking quantity. Yes. Okay. Next we have risk reward ratio. Right? See, risk reward ratio, there are many parameters in this reward ratio, like 1:1, 1:2, 1:3. So it depends on trader to trader which particular risk reward you are going to choose, right? Depending on your risk appetite. Yeah. So 1:1 means $1 will be your risk and $1 will be your target, right? Yes. And 1:2 means $1 will be a stop loss and $2 will be your profit. So likewise 1:3 and 1:4. Right? See, Yes. if you are a scalper, most of the things I would suggest to use 1:1 if you are a scalper, because scalping is just for a couple of minutes, right? So in that, yes, you can use 1:1 as a risk reward. If you are an intraday, you may go for 1:2. And then if you are doing positional trade like for 3 days, 5 days, 10 days or 15 days, then maybe you can try it. Okay. I normally prefer these two. For intraday and swing, like positional also. Mostly I will try to look for 1:2. Okay. So it depends. So it can represent, like $100 loss and $200 profit, right? Yes. That's one as well. Right. Okay, this clear? Yes, sir. Okay.
So now coming on to money management, means how you manage your capital to use in trades, right? Money management. So as you are trading in forex, let's say you have a capital of $200, right? So money management says that the first part you have to use the risk management, that is obvious. But apart from that, how much capital you have to use in one trade, right? So what you have to do, you should split this capital in the ratio of 20%. Okay. So 20% is how much? $40, right? 40. Yes. So you should not use more than $40 in one trade. You should not lose, right? You should not use. You should not Oh, take use. a Okay. you should not take a trade of more than $40 in one trade. Okay. Let's say you want to take, if you want to take 5 trades, so then each trade has to be of $40, right? So total 5 trades in $200, correct? Yes. Okay. And maximum capital that you can use at a time is 50%. Means maximum $100 only you should use at once in trades. $100 has to be at your backup plan. Okay. In case you want to adjust the number of lots later, or if you want to do a cost averaging at some price, so for that purpose you need to have the remaining money as your backup plan. Okay. Yes. So even so, for example, like you said, $40. If I take that $40, I can split it into 4 trades, meaning each trade should be $10, right? That you can plan. That also you can plan. But don't take multiple trades at a time. Not more than 2 trades at a time. Okay. Because if you are having multiple trades, then sometimes you may get confused of the trades, and then you may get stuck in trades, right? So that's the reason we should not. It's a kind of, we can call it as over trading, right? We should not over trade. Okay. Yes. So maximum 1 or 2 trades at a time. That's it. Correct. Okay, so this is how you can manage your money as well. Okay. Yeah. So 20%. Yeah. Okay. Okay. See, for forex and crypto, it's different percentage. But if you are going for stocks, then you can use at least 50% of your capital. Oh, stocks 50%. Because they are considered safer as compared to forex and crypto. It's So for each long term. so for each instrument, the capital usage is different. Okay. Okay, fine. This clear. Risk management, money management. Yes. So candles, I have explained you, right, and you also know about it, right? The prices and the body structure, correct? Mm-hmm. And how about hammer? Hammer is clear to you? Yeah, hammer is clear. Oh wait, one question with the hammer, Yeah. right? When I have a, can I maybe draw it on the screen? Yes, sure. I'll give you access. I think you may not be having the access. Can you check you have access? Yeah, I have. Okay, so if I have a candlestick like this, right? It is done like that. Okay. Right, so like you said, I draw my, I should draw the 2 lines. Yeah. So say I draw my 2 lines on top, like this.
happens if the next candle breaks above here but hasn't closed yet? It is still what you call it? It is still in progress. It hasn't closed yet. Should I buy when it? Wait for, see, once you are a beginner, whenever you are a beginner in trading, you need to wait for that, right? But because see, many experienced traders, they know how it is going to move based on many other parameters. We may have to see the volume also at that time. How is the volume? If the volume is greater than the previous time, then it may give, then there is a chance that it may give a breakout. In that case, correct. So for a new trader, I would always suggest to wait for that candle to close and then enter. Okay, so if the candle closes, say it closes like this, right? And then the new candle forms and it does this. Like, should I buy or not if it hasn't exceeded? Yeah, see, there are two things here. So no. Correct. Okay, so this is how you can manage your money as well. Okay, yeah, so 20%. Yeah. Okay, see, for forex and crypto, it's different percentage. But if you are going for stocks, then you can use at least 50% of your capital. Oh, stocks 50%. Because they are considered safer as compared to forex and crypto. Yes. So for each long term. So for each instrument, the capital usage is different. Okay. Okay, fine. This clear risk management, money management. Yes. So candles, I have explained you, right, and you also know about it, right? The prices and the body structure, correct? And how about hammer? Hammer is clear to you? Yeah, hammer is clear. Oh wait, one question with the hammer, right? When I have a, can I maybe draw it on the screen? Yes, sure. I'll give you access. I think you may not be having the access. Can you check you have access? Yeah, I have. Okay, so if I have a candlestick like this, right? It is done like okay. Right, so like you said, I draw my, I should draw the two lines. Yeah. So say I draw my two lines on top, like this. What happens if the next candle breaks above here, but hasn't closed yet? It is still what you call it? It is still in progress. It hasn't closed yet. Should I buy when it? Wait for, see, once you are a beginner, whenever you are a beginner in trading, you need to wait for that, right? But because see, many experienced traders, they know how it is going to move based on many other parameters. We may have to see the volume also at that time. How is the volume? If the volume is greater than the previous time, then it may give, then there is a chance that it may give a breakout. In that case, correct. So for a new trader, I would always suggest to wait for that candle to close and then enter. Okay, so if the candle closes, say it closes like this, right? And then the new candle forms and it does this. Like, should I buy or not if it hasn't exceeded? Yeah, see, there are two things here. This candle has closed like this, that means there was a breakout, right, in this scenario. Right? Yes. And then after breakout, there has to be a breakout retest. So here it has tried to retest the same zone, right? So there are two things. Yes. You can buy at the high of this price, right? Yes. Or you may wait for a retest in this zone. Yes.
Or second scenario could be like, if you want to, let's say, if you want to buy 10 quantities, then what you can do, 5 quantities you can buy here, and remaining 5 quantities, once it comes here, you can add it. Oh, okay. Yes. So there are multiple ways, there are multiple use cases. Every trader will try to execute it differently. But the safe option is for this candle to, when it breaks above, right? Yes. So I can go for a buy. And see, most of the traders who consider them the safest, they will wait for a retest. Sometimes the retest may not come, but if the retest comes, then your stop loss will be very small here. Yes. Because in this case, your stop loss will be here, same. Stop loss will be here in the same area if you buy here also. Yeah. And if you are waiting for a retest, then you may buy, or you may get an entry somewhere here, maybe, right? So that's the reason your stop loss will be here. So your risk will be less here. But sometimes the instrument may not come for a retest. Now it will keep going up and up again. So that's the reason you may miss the trade. Yes. So all these scenarios you have to consider and plan which particular plan you want to do it. Yes, sir. Okay, it's clear. Yes, clear. And in case of, let's say you have multiple hammers, right? We were talking about that. So what will happen if we have multiple hammers formed, or multiple doji, or multiple candles, right? Like this, in the similar zone, right? So what you have to do, you have to consider the high of the, whatever the highest price among all the 4 candles, that you have to consider, and whatever is the lowest price among all the candles, that price you have to consider. Okay. Because it looks like it's a kind of this consolidation here, right? It is trying to trade in a range, correct? So in that case, we may have to consider the range, right? The highest price of all the candles and the lowest price of one of the candles, and then we'll wait up for a breakdown. Yes. Oh, and what is a doji candle? What does it do? Yeah, see, doji is a kind of, you can say that, indecisive candle. It's a indecisive candle. See, normally doji, if we may see that buyers and sellers may be equal. That is why most of the times this candle is formed, right? So yeah, so that's why we call it as a indecisive candle. Okay. I'll show you on chart, then it will be clear. One second. Okay, no problem. Okay, I see one over there. See, one perfect doji will be like this. Yeah, this part. See, in doji the body has to be zero, right? The perfect doji will have no body. It has to be like a cross sign, right? The plus sign. Yes. So this is the perfect doji. If I put my cursor on this candle, then at the top you may see the prices, right? So in that you may see that open and close price is almost equal. See, open price is 4943.3 and close price is 4946. Almost equal, right? Yes, almost equal. Yes. So the perfect doji will have both open and close price same. That means buyers and sellers are equal. Nobody is dominating in a doji candle, right? So
We can call it as the indecisive candle also. So how we have to pick a doji candle? See, since it is a indecisive candle, we have to wait for a breakout or a breakdown. Okay, and do we also now we put those two lines on top, right? Yes. Okay. So you have to wait for breakout upward. Breakout or a breakdown. Yes. Okay. Because like in this case, the next candle bullish went above. Yes. Yes, it caused the high. So it's a bullish. So that means it's a buy trade for us. Okay, and which one is support? Is support the top one? And resistance, which one? There is a resistance here, right? You can see that one resistance is here, right? And support is at the bottom. Support is here. You can see that a lot of accumulation has happened here, right? You can see that. A lot. Multiple candles at the same means some trader, some big trader, someone has tried to buy it at each and every price. Yes. So this is called accumulation. Accumulation. Okay. Accumulation. See, accumulation normally happens at the bottom and distribution normally happens at the top. Accumulation means some big trader or some smart money is trying to buy those instruments, and in near future there may be a breakout. Distribution means some smart trader or a big money is trying to sell out those trades, and in near future the price may come down. Yes. Okay. The candles may look like same accumulation and distribution. The only difference is accumulation is like a buying, you can say that bullish, and distribution is kind of bearish. Okay. So here you can see that there was a resistance here, or what you can do is that box, right? You can maybe see that the price is ranging in a box, right? So and then you can wait for a box breakout. Yes. First breakout is from doji, and since we have one more resistance here, so we may need to wait for this box breakout. Okay, and so like you see that candle, what happened was that candle it closed over here, right? This candle here. Yeah. It closed above this line. Correct? Yeah. So then is it okay to go for a buy? This is a breakout retest, right? You can see that. Yes. So as I have told you that either you can buy at the high price of this candle, even you can take a risk here also once there is a box breakout, and also you can wait for a retest. Okay, but what if the retest is not valid? Say it now starts coming down. See, that you have to use the stop loss there. Stop loss, okay. So that's the reason we have stop losses always there in the place. Okay, I understand. And if you see the historical chart in this same instrument, there are multiple resistances you can see right here. These areas are the resistance, right? Yes, are the resistance. This part. So for profit and target bookings, you may need to consider this kind of. That's for consolidation. Once you take an entry here, then you are looking for the profits or targets, right? So we have a small resistance here, and then a big resistance here in this area. Okay. So we want the price to come back in that range, right? R1, R2, right? So if you are looking to book profits, once let's say you took an entry here, right? Your stop loss will be here. And if you are looking to book profits, you may try to look in this area to book the profits. Yes.
since we have a small resistance on this one. Yeah, because that's when it broke down. Yes. There was a downtrend. Yeah. So you put your resistances on top. Yes, and this is a strong resistance as we see a big green candle. This area is dominated by sellers. Means whenever the price tries to come here, the sellers will come to sell that particular instrument. So this is a very strong resistance area since we have a big red candle. Okay. Okay, let's see one or two more doji candles. See here also. See here. Oh yes, I see the bearish one. See, it doesn't matter whether the candle is red or green in case of doji or hammer. Just have to find the shape, perfect shape of that. That's it. Whether it's red or green, it doesn't matter for doji because doji is anyway the indecisive candle, right? Because we have equal number of buyers and sellers. Yes. So we just need to focus on the high price. See, in this case, you can see a doji is here, one small kind of hammer, and doji is also here, right? So there are three candles here, right, in the same area. Yes. So what you have to do, you have to mark the high of this candle. The highest among the three candles is this, and the lowest among these three candles is this area, right? Yes, correct. So what you have to do, you may need to form a kind of box in these three candles, and then take your trade based on this box. So since price of your stop loss, and once it goes from here, it will be a entry point. Okay, so like you said, there's an entry point, right? This candle it closed over here, right? It closed over there, and that's the bottom line. So this candle closed, and this candle here was able to break that price. So that means I can go for the buy. Yes. Okay. Right. And your stop loss will be here. Yes, at the bottom. At the bottom. Is the stop loss has to be exactly at the lowest price of that red doji, or you can take some buffer points, because sometimes the operator may try to play manipulation and all, so you may try to take some buffer. Let's see what is the price here. See, the lowest price is coming around 5156.570, right? Yes. So what we can do is that we can keep it like some buffer like 5150 or 5152, like that we can keep some buffer for stop loss. Okay. Yes. Yeah. So in doji also there are many types of doji. One is like this, and you may see the long one also, right? Yes. And one candle will be like this, and one candle will be like this. Oh, those are also doji candles. Those are also doji candles. Okay. This is called gravestone. Gravestone. This is what? Gravestone. Gravestone. Okay. And this is dragonfly doji. Dragonfly. DRAG. Dragonfly. Dragonfly doji. Okay. Okay. So this. And then the other one. These are normal doji only. These are normal dojis only, but this is called long leg doji. Long leg. Okay. 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 So I will show you these candles also. One second, if I find. See, this is a kind of, you can say that dragonfly, right? Not dragonfly, gravestone. See.
That's gravestone. Yeah. So gravestone basically is a signal of a bearish candle. So the market may try to come down from there if a gravestone doji is formed at the top. You can see that here it is formed at the top, right? Yes. And as I have explained you about the distribution, so this is all distribution. Mm-hmm. And once the price went outside this box, you can see that a big red candle. That means there was a breakdown, right? It already signaled you here. It already send you a signal that, boss, this is gravestone and I'm going to go down. But they may try to distribute for some days and then some days or maybe some candles, and then after that they will give a breakdown. Yes, because then after that, that next candle, yeah, the candle again broke. It broke this point here. So since gravestone doji is already formed here, you may enter here only. Your stop loss will be here, high, and targets will be in this range because this is the previous consolidation range, right? You can see that target will be here. That's your target. Okay, and I have a question. Yes. This type of setup, right? You can involve a trailing. Is it trailing? Yeah, trailing stop loss. You can use it. Right, because if you maybe are going for, if your target is like here, like you said here, right? Then maybe you can bring your stop loss lower, then lower. Yeah. So how you can trail? See, I'll tell you how you can trail in this scenario. Okay. So let's say this is your box.